So welcome back again. Today we are going to discuss architecture of 8086 microprocessor. What we did right from beginning, we started from computer. I told you the concept of computer first. Then we went ahead and discussed what is microcomputer. Then concept of buses, how the data is flowing through the buses. Then we have discussed the concept of microcomputer. And then we talked about yesterday lecture, we talked about the pinout diagram of 8086 microprocessor, and we discussed all the details pinout diagram of 8086 microprocessor. Now this is next step. Today we are going to discuss the architecture of 8086 microprocessor. Now what is the purpose of studying architecture? The main purpose of studying architecture is now, because yesterday we have discussed the external view of microprocessor, how the microprocessor IC looks like, what are the functionality of various pins, because we know microprocessor 8086 microprocessor is 40 pin DIP. Okay, so we have seen like what are the 40 pins and what are the functionality of each and every pin. Today we are entering inside the processor now we are going to see what is there inside the processor, to see how the data is being flowed. Okay, now what we are going to understand, how the data is transferred from output device and memory, input device and memory device, IO devices and memory to the processor, and from processor to the IO devices or memory, and then within the processor how the data is being transferred from one register to another register and how it is executed. Right, this is what we are going to discuss in this particular architecture. This article is very important. Let me tell you, my friend, you need to see this very carefully. Whenever you are having queries, you start writing down your queries, and in the last lecture you can ask me those queries, because once you understand this clearly, then you will not have any problem, let me tell you. Okay, but if you don't understand this properly, then you are going to have a lot of problem. So that care you have to take. It is your responsibility to see it very carefully, and whenever you are having problem, you can ask me questions here and there. So this is the internal block diagram of 8086 microprocessor. We can call it as a either internal block diagram, or we can call it as a internal architecture of 8086 microprocessor. Now if you look at this, there are two different units as far as the internal architecture is concerned. You can see right in the middle, you can see the separation. On this side, on the right side of this block diagram, we have got bus interface unit. We call it as a BIU. On left side, we have got execution unit. Now if you look at this bus interface unit, what is the role of bus interface unit? Bus interface unit fetches instructions and data. Okay, bus interface unit fetches instructions and data. Now what kind of data? You see, whenever we are talking about microprocessor, microprocessor is going to do some operations like arithmetic and logical operation. Let us say addition, right? For addition we need some data, right? So data is going to be taken, or data is going to be received either from memory or from input device. Once the data is processed, again the processed data can be transferred to either memory or output device. It means that this bus interface unit, and moreover this is one thing, and moreover for execution of any instruction we need some instruction, right? So that all entire instructions and data is going to be kept at memory, in the memory, specified memory, which is outside the processor. Okay, there are two different kind of memory we will be speaking about. Okay, one is internal memory of processor and external memory of the processor. Both the memories which I am talking about are semiconductor memory, internal memory of processor and external memory of the processor. मतलब प्रोसेसर की बाहर की जो मेमोरी है, प्रोसेसर की बाहर की जो मेमोरी होती है, वहां पर हमारे इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्टोर किया होता है. What processor has to do? Processor has to, we have to, in fact, like whenever we are talking about execution of any program, we have to fetch the instruction. Fetching का मतलब क्या है? Transfer of instruction from memory to microprocessor. This is what you call as fetching. तो हमें instruction भी देना है, हमें data भी देना है. And at the same time, once the instruction is executed, the process data memory or output device पे हमें store करना है. So this is what we call as fetching of data and fetching of instruction. This is being done by bus interface unit.
Why it is called bus? Because we need buses to transfer the data from memory to the processor and for IO device to the processor, similarly from processor to memory and the IO device. Moreover, we need buses to transfer data internally within the processor as well, and therefore this is called as bus interface unit. The main role of bus interface unit is to fetch the instruction from memory and read and write the data from and to and from the memory. Okay, this is the main role of bus interface unit. And then on the other hand, you can see the execution unit. What is EU? EU stands for execution unit, and the role of execution unit is to execute the instruction which has been fetches, right? Moreover, let me tell you, my friend, as far as 8086 microprocessor is concerned, one of the advantages of 8086 microprocessor were 8085 microprocessor earlier version. 8086 का earlier version क्या है? 8085 microprocessor, which was 8-bit processor. I don't know whether you have studied 8086 8085 or not during your undergraduation, but अगर आपने पढ़ा होगा 8085 माइक्रोप्रोसेसर तो आपको शायद पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आई एम टेलिंग यू 8085 माइक्रोप्रोसेसर वाज earlier version of 8086 microprocessor. 8085 was 8-bit processor, 8086 is 16-bit processor, and there are many differences. Moreover, 8086 is having higher speed. There are many reasons why 8086 has higher speed as compared to 8085. There are many reasons. One of the reason is this execution process and the bus, fetching of instruction. These two processes are being happening independently or parallelly, right? हालांकि इसमें क्या होता था 8085 माइक्रोप्रोसेसर में इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करता था, पैरेलल नहीं हुआ करता था. लाइक पहले इंस्ट्रक्शन फेच होता था, मतलब we used to feed the instruction and data, and once the instruction is fetches, and then it was like it can be executed as far as 8085 is concerned. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 8085 में क्या होता था कि क्या होता है, रादर डेटा हमें फीड करना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है प्रोसेसर को. प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन ले लिया, डेटा ले लिया, उसके बाद में वो एग्जीक्यूट करेगा. एट दैट टाइम वो दूसरा डेटा नहीं लेगा, राइट? लेकिन 8086 में क्या होगा, एक बार डेटा देने के बाद यू कैन सी द टू डिफरेंट सेक्शन. ये सेक्शन क्या करेगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा, मेमोरी से डेटा लेगा. वंस द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इज रिसीव्ड बाय द प्रोसेसर बाय द BIO यूनिट फ्रॉम द मेमोरी, वो जाएगा एग्जीक्यूशन यूनिट में, एंड देन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. जब एग्जीक्यूशन यूनिट काम करने लगेगा तब ये खाली नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, दूसरा डेटा लेते रहेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज the pipelining concept. This is what we call as pipelining concept. This pipelining concept has been introduced in case of 886, and therefore there is a substantial increase in the speed of the 8086 microprocessor as compared to 8085 microprocessor. इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, इसका एडवांटेज कैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका एक आम एग्जांपल देता हूँ. आपको पता होगा कि हम जब डॉक्टर के पास जाते, राइट, अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है तो उनके पास काफी क्यू होती है. स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है तो अगर क्यू होती है, तो आपने देखा होगा कि देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ बफर्स एज फार एज द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इज कंसर्न. पहले जब जाएंगे आप तो पहले आपको एक बड़ी स्पेस रहेंगी, वहां पर सबको बिठाएंगे आपको, राइट? आपको नंबर दिया जाएगा, वो रिसेप्शनिस्ट रहेगा, आपको नंबर दिया जाएगा, राइट? एंड देन दैट इज लाइक फर्स्ट बफर. उसके बाद क्या होगा कि एक 4-5 पेशेंट को एक इंटरनल बफर में बिठाएंगे. आपको लगेगा कि आपका नंबर आया, लेकिन नहीं, एक इंटरनल बफर होगा जो कि डॉक्टर की जो रूम होगी उसके बाहर होगा. बाहर एक 3-4 पेशेंट को बिठाएंगे, एंड देन अंदर कुछ पेशेंट रहेंगे. मतलब आपको क्या होगा कि बाहर से पहले जो इंटरनल बफर है, ये छोटी सी रूम होती है, वहां पर बिठाएंगे, एंड देन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द डॉक्टर जो है किसी और पेशेंट को देखते रहेंगे. जब मोमेंट वो पेशेंट खत्म हो गए, आपको अंदर छोड़ा जाएगा, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ, ये ऐसे ही है कि जैसे बस इंटरफेस यूनिट, उसको पेशेंट इंटरफेस यूनिट होगा कि आप बाहर से अंदर जाएंगे, अंदर का छोटी सी जगह जो होगी वहां पर आप बैठेंगे. एट दैट टाइम डॉक्टर जो है किसी और पेशेंट को देखते रहेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करते रहेंगे, राइट? once that patient is I mean वो पेशेंट का एक बार पूरा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब पेशेंट बाहर आएगा तो immediately will be going there. So there will be like, since there would be huge rush with those specialized doctors, what they do, they follow these kind of practices. लेकिन जो जिस डॉक्टर की, जो आम डॉक्टर है, जनरल फिजिशियंस है, अगर उनके पास ज्यादा रश नहीं रहे तो आपको वो उस टाइप के बफर नहीं दिखाई देंगे. आपको
आप बाहर बैठेंगे वहां से सीधा डॉक्टर के रूम में जा सकते हो, राइट? सो वहां पर अगर ज्यादा रश होती है तो देयर वुड बी chaos, राइट? So in order to avoid that chaos and in order to have the efficient execution of instruction, you can have pipelining concept. This is what you call as pipelining concept, ये जो कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में बड़े effectively implement किया हुआ है, right? Let us focus on BIU now, bus interface unit. Now what are the different units of bus interface, that I am going to tell you. So you can see this is the first part, which is called a bus interface unit. Now पहले क्या है? Address generation. What is the role of address generation? You can see dedicated adder to generate 20-bit address. Now what is 20-bit address? आपको मैंने बताया कल कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर की एड्रेस बस कितनी बीट की है? 20 बीट का है. सो 20 बीट मतलब क्या है? देखिए 20 बीट, वन हेक्स डिजिट वुड बी 4 बीट, वन हेक्स डिजिट वुड बी 4 बीट. तो हमारे पास कितने बीट्स, कितने हेक्स डिजिट रहेंगे? 20 बीट मतलब 5 हेक्स डिजिट रहेंगे, राइट? 5 हेक्स डिजिट रहेंगे. लेकिन जब मैं आपको आगे जब बताऊंगा कि ये कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये जो सेगमेंटेशन जो है मेमोरीज का, ये सेगमेंटेशन you can access only 64 kilobyte memory. Whenever we are talking about 64 kilobyte means total number of bits रहेंगे 16, number of bits रहेंगे 16. अगर 16 bit, that is why these CS, DS, code segment, data segment, stack segment and extra segment, these are 16 bit registers. 16 bit का मतलब क्या है? They can accommodate only 16 bit of data. 16 bit मतलब 4 hex digit. एक hex digit, one hex digit consisting of 4 binary bits, right? 4 का एक, दूसरा 4, तीसरा 4, चौथा 4, 4 multiplied by 4, 16 bit. Okay, so all these segment registers are 16 bit, and that is why 2 to the power 16 that gives you 64K. इसलिए मैंने कल बताया था आपको कि all segment register can have maximum memory of 64 किलोबाइट. लेकिन हमारा जो मेमोरी है, क्योंकि एड्रेस बस जो है वो 20 बिट का है, 20 बिट का एड्रेस बस है, तो आपने अभी, आपको पता नहीं है, लाइक व्हेनेवर यू विल बी डूइंग प्रैक्टिकल, you will come to know that you are essentially feeding only 16 bit address as far as addresses are concerned. Whenever you will be executing program, you will be giving only 16 bit address. मतलब 16 bit अगर एड्रेस हम दे रहे हैं एंड अगर 20 bit अगर एड्रेस बस है, तो what we need to do, we need to convert that 16 bit address into 20 bit. ओके, मतलब 16 बिट एड्रेस जो है हमें 20 बिट में उसको कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी इज 20 बिट, राइट? तो इसीलिए हमें जो 16 बिट का जो है कन्वर्जन जो है 20 बिट में करने के लिए सेपरेट एडर है, एंड दिस इज द डेडिकेटेड एडर व्हिच विल जनरेट 20 bit address. Okay, I'm sure you will be having some questions. You start writing down those questions and you can raise those questions at the end of the session. Then this is the role of address generation, right? This adder particularly, right? Then we have got 4 segment registers. As I told you earlier, memory has been segmented. पूरा 1 मेगाबाइट का मेमोरी जो है वो क्या किया हमने, 4 सेगमेंट में उसको सेगमेंट किया हुआ है. सो फर्स्ट इज कोड सेगमेंट, सेकंड इज डेटा सेगमेंट, थर्ड वन इज स्टैक सेगमेंट एंड फोर्थ वन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट. ये चारों जो है ना, यू कैन सी हियर, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. दीज आर 16 बिट रजिस्टर. ओके, 16 बिट रजिस्टर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि दे कैन अकोमोडेट ओनली 16 बिट ऑफ डेटा, नंबर 1. Number 2, as I mentioned earlier, since it can have a 16 bit address, what would be memory capacity? 2 to the power 16, मतलब कितना? 64K. It means that the memory capacity of each segment is going to be 64K. वो आपको समझना होगा. Then there would be internal communication registers, because internal communication registers का मतलब क्या है कि टोटल हमारा जो 1 मेगाबाइट का मेमोरी है उसको हमने सेगमेंट किया 4 सेगमेंट में, but there would be some memory in between. We always keep it reserved for for isolation purpose and for some internal communication purpose, right? So there would be some internal register which will be used for controlling the operations. This is all about this CS, ES, SS, ES and internal communication register. There is one more register, IP. This is also 16-bit register. IP is instruction pointer. Instruction pointer is very special purpose register.
Okay, IP I will tell you later. Let me finish with this segment register. I will not refer this diagram. Rather, I will forget about the, because this is a little bit confusing diagram. So I don't want to discuss this too much, but I have drawn another diagram which is going to be more clear. Now you need to remember that what we have done, entire 1 megabyte memory has been segmented into 4 different segments, and each segment will have 64 kilobyte of memory. You can see this is a more clearer diagram. You can see. So this is the entire memory map. Okay. Now since it is 20 bit, 20 bit का मतलब क्या है? हमारे कितने hex digit होंगे? 5 hex digit. You can see 0 0 0 0 0 H. H stand for hexadecimal. तो each एक हेक्स डिजिट मतलब 4 बीट होंगे. तो क्या होगा? 4 4 4 4 and 4 multiplied by 5, 20 bits. So these are hex digit. So what would be address of first location? 0000H. ऐसे हम डिनोट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में. एड्रेस डिनोट इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस को 000000H. Now what would be last address? Last address would be FFFFFH. Okay, because we know there are only two possibilities 0 and 1. So if 000 is going to be the minimum address, maximum address of this memory is going to be FFFFH, and the entire memory would be 1 megabyte. How we have calculated 1 megabyte? I told you earlier that since there are 20 bits, 2 to the power 20 will comes around 1 into 10 to the power 6, 1 mega. And why byte? Because each memory location, let us say this is one location, 00000H is one location. This location can accommodate 8 bit of data, 1 byte of data. Similarly, next would be 000001. Okay, 000001. Sorry, 01. So that would be a second location which will again accommodate 8 bit of data. So each memory location can accommodate only 8 bit of data, and therefore it is called as 1 megabyte memory. Okay, तो बाद में हमने क्या किया? जैसे मैंने बताया आपको कि we have segmented it. कितने segment किया हमने? 4 segment किया. You can see here, this is code segment 64K, data segment again 64K, extra segment 64K, and stack segment 64K. अगर हमने देखा वैसे अगर देखा जाए, अगर हमारे पास 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, तो we could have segmented in 256K. We could have allocated 256 kilobyte of memory. 256 plus 256, 512, and 512 plus 512, it would have been 1 megabyte, right? लेकिन हमने वैसा नहीं किया. The reason is we need to have some space for isolation, so that there would be some isolation. आप देखिए यहाँ पर सब कुछ isolation है, right? Now since each segment can have a 64 kilobyte, उसका एड्रेस क्या होगा फिर? 0000H, और आखिरी क्या होगा? FFH, right? ये क्या होगा हमारा? These are the memory location for each segment register. Okay, इसका ये 00000 to FFH, वैसे ही इसका भी 00000 to FFH, क्योंकि सभी का इनिशियल एड्रेस यही रहेगा, फाइनल एड्रेस यही रहेगा, राइट? अब these are going to be referred as logical address. Okay, ये जो है ना, जैसे मान लो हम कोड सेगमेंट एक्सेस कर रहे हैं, तो we are going to feed this only, right? But माइक्रोप्रोसेसर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन है. तो कैसे पता चलेगा? Unless we calculate the physical address. Okay, unless we calculate physical address, it's not going to be identified. तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं. जैसे कि मान लो एक कॉलोनी है, राइट? ये कॉलोनी है, राइट? अब कैसा है? ये टोटल कॉलोनी है एक, जैसे कि औरंगपुरा मान लो. औरंगपुरा में क्या 4 रोज है. कितने रोज है? दिस इज 1 row, 2nd row, 3rd row and 5th row. Now in each row there are, let us say, 100 houses. In each row there are 100 houses. तो यहाँ पर भी 1 to 100 नंबर रहेंगे, यहाँ पर भी 1 to 100 रहेंगे, यहाँ पर भी 1 to 100 रहेंगे, यहाँ पर भी 1 to 100 रहेंगे, राइट? मान लो अगर आप पोस्टमैन हो, आपके पास एक लेटर आया है, मिस्टर XYZ, औरंगपुरा, हाउस नंबर 50. ओके, ये औरंगपुरा है. दिस इज द एरिया लोकेशन विच इज कॉल्ड एज औरंगपुरा. ओके, आपके पास लेटर है, आप पोस्टमैन हो, आपके पास लेटर आया है, राइट, जिसमें लिखा है मिस्टर XYZ, औरंगपुरा, हाउस नंबर 20 और हाउस नंबर 50. अब हाउस नंबर 20 और 50, क्योंकि 100 हाउसेस है, यहाँ पर भी है, इस रो में 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 भी है. अगर वो क्या होगा? हाउस नंबर 50 वुड बी लॉजिकल एड्रेस. हाउस नंबर 50 वुड बी लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि जो कि
तीनों रोज में रहेगा। लेकिन फिजिकल एड्रेस अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि रो ए बी सी डी, आप इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, राइट। रो ए, रो बी, रो सी, रो डी। तो ए अगर 50 है तो आप सीधा रो ए में जाएंगे, बी 50 है तो आप बी रो में जाएंगे, सी 60 है तो आप यहाँ पर जाएंगे, एंड सी 60 है तो आप डी 60 है तो आप यहाँ पर जाएंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट these numbers are going to be same. Okay, these are called logical addresses. But आपको अगर लॉजिकल एड्रेस का कन्वर्शन फिजिकल एड्रेस में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। ओके, वो प्रीफिक्स लगाना है, इसका मतलब आप यू आर कन्वर्टिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। सेम थिंग इज ट्रू विद माइक्रोप्रोसेसर एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी लॉजिकल एड्रेस। आप देख रहे होंगे कि हर सेगमेंट में लॉजिकल एड्रेस सेम होगा। अगर आपको ये लॉजिकल एड्रेस का कन्वर्शन फिजिकल एड्रेस में करना है तो अगेन यू हैव टू apply, you have to connect some prefix. How that is going to be done, I'm going to tell you in due course of time. Okay, so this is how the segmentation is. Now let me tell you code segment. Okay, what is CS code segment? This is, let me tell you, code segment register is 16-bit register. CS contains the base or start of the current code segment, and IP contains the distance or offset from this address to the next instruction byte to be fetched. ओके, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कोड सेगमेंट जब हम कहेंगे तो फिजिकल एड्रेस जब हम कैलकुलेट करेंगे, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का एक तरीका है, राइट। व्हाट इज दैट तरीका? दैट आई एम, लेट मी टेल यू दैट मेथड। ओके, दिस इज द मेथड। ओके, आई विल गो बैक, ओके, बट लेट मी टेल यू हाउ द कैलकुलेशन ऑफ 20-bit फिजिकल एड्रेस कैन बी डन। ओके, जैसे कि सीएस का एग्जांपल दिया मैंने। CS आप अज्यूम करिए कि CS में 1000H है, क्योंकि CS इज 16-bit रजिस्टर। आप उसको कितना डेटा दे सकते, कितना बिट एड्रेस दे सकते, ओनली 16-bit। ओके, नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द 20-bit फिजिकल एड्रेस, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस CS बाय 10। जो प्रीफिक्स की बात कर रहा था मैं, यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है। आप पहले नहीं लगाएंगे, आप प्रीफिक्स बाद में लगाएंगे। सो दिस 1000H विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10, and as a result of that this will become 10,000H. H इसीलिए लिखा है क्योंकि this is hexadecimal. Okay, so this is going to be terminated after 10 minutes and you will have to rejoin very quickly. Okay, okay, so आपका क्या CS क्या हुआ आपका फिर 10,000H हुआ। Now IP, जैसे कि आपको अगर कोड सेगमेंट का फिजिकल एड्रेस निकालना है, so IP will be having instruction pointer will be having your logical address। जो मैं लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहा था ना, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर विल बी हैविंग लॉजिकल एड्रेस, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो 10,000 है, 10,000 में 8,000 ऐड करना है, लेकिन कहां पर, ये लोअर 16 डिजिट में, लोअर 16 बीट में। ये जो लोअर 16 बीट है ना, या लोअर 4 डिजिट, आप हेक्साडेसिमल की बात कर रहे होंगे तो आप यू कैन से लोअर 4 डिजिट। अगर बाइनरी बीट्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि you need to add this 8,000 on to the lower 16 bit or lower 4 digits of hexadecimal, right? So you can see 10000 H plus 8,000H, it becomes 180,000. So you can see now this is a 20 bit address. So earlier CS is having 16 bit, IP is also having 16 bit, but by using CS and IP we could convert this logical address into physical address, which is going to be a 20-bit. Okay, now what does it mean if you want to convert logical address of code segment into the 20-bit physical address? You need to consider CS and IP. IP is instruction pointer. Instruction pointer is the again 16-bit register which is being used to keep a track of program execution. मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा IP का। Okay, so this is how the physical address can be calculated. Okay, let us go back. तो ये मैं बात कर रहा था कि आगे कोड सेगमेंट का, क्योंकि ये जो लॉजिकल एड्रेस कहाँ रहेगा, एज फार एज कोड सेगमेंट इज कंसर्न, लॉजिकल एड्रेस कहाँ रहेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में रहेगा। ओके, इसके ये लॉजिकल एड्रेस कहाँ रहेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। मतलब आपको कोड सेगमेंट का अगर फिजिकल एड्रेस निकालना है, 20-bit फिजिकल एड्रेस निकालना है, तो आपका बेस एड्रेस रहेगा कोड सेगमेंट में एंड लॉजिकल एड्रेस रहेगा instruction pointer में। And this is what they here it is mentioned, the CS contains
the base or the start of the current code segment. An IP contains the distance or offset from this address to the next instruction byte to be fetched. अब offset का मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ. Offset, either this address can be referred as a logical address or offset address, right? अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उसको लॉजिकल या ऑफसेट क्यों कहते हैं, राइट? लॉजिकल इसीलिए क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, एक्चुअल एड्रेस नहीं है, दिस इज वर्चुअल एड्रेस. ओके, वर्चुअल और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? वर्चुअल मस्ट मींस इमेजिनरी एंड एक्चुअल मींस इन एक्चुअल, इन रियलिटी. ओके, क्योंकि हमारा एड्रेस बस देखिए कैसा है, हमारा एड्रेस बस 8086 का कितने बीट का है? 20 बीट का है. जब एड्रेस बस हमारे 20 बीट का है, इसका मतलब फिजिकल एड्रेस और एक्चुअल एड्रेस कितने बीट का होना चाहिए? 20 बीट का होना चाहिए. अब क्योंकि ये 16 बीट का है इसीलिए एक्चुअल नहीं है, इसीलिए रियल नहीं है, इसीलिए आइदर वी कैन कॉल इट एज ए द लॉजिकल एड्रेस और ऑफसेट. ओके, लॉजिकल का आप समझ में आया. अब ऑफसेट क्यों? क्योंकि ये हमें बताएगा कि ये कोड सेगमेंट यहां से लेकर, क्योंकि कोड सेगमेंट रजिस्टर में क्या होगा? इसका स्टार्ट एड्रेस होगा, इसका बिगिनिंग एड्रेस कहाँ रहेगा? कोड सेगमेंट में. लॉजिकल एड्रेस हमें बताएगा कि ये स्टार्टिंग से कितने दूर हमें जाना है, मतलब डेटा हमारा जो स्टोर है वो कितने दूर है स्टार्टिंग एड्रेस से. ओके, दैट इज गोइंग टू बी आई मीन ड्रिवन और that can be decided by the logical address. Okay, तो कोड सेगमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? कोड सेगमेंट का रोल क्या है? It will hold the base or start address as far as the code segment is concerned, and offset address or logical address is going to be there in IP, and by using CS and IP we can calculate a 20-bit physical address that I have already demonstrated. This is all about code segment. Similarly, you are going to have a data segment, right? Data segment में वैसे ही है, उसका base address जो है, base address या starting address would be there in data segment. And what about the offset address? Offset address will be there either in SI or DI. What is SI? SI is source index register. Again, another 16-bit register. SI is another 16-bit register. I'm going to tell you SI and DI in detail later. खाली यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि SI and DI, these are two different 16-bit register. SI means source index register and DI means destination index register. तो DI और SI में क्या होगा? जब डेटा सेगमेंट का फिजिकल एड्रेस हम निकालेंगे, ये डेटा सेगमेंट, फिर से मैं ये डायग्राम आपको रेफर करता हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ डेटा सेगमेंट. डेटा सेगमेंट का 20 बीट फिजिकल एड्रेस जब हम डिराइव करेंगे तब उसका स्टार्ट एड्रेस कहाँ रहेगा? डेटा सेगमेंट में, मतलब DS में. DS इज द डेटा सेगमेंट रजिस्टर. ऑफसेट या लॉजिकल एड्रेस कहाँ रहेगा? ये जो एड्रेस कहाँ रहेगा? आइदर इन DI और SI, इन डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर. Okay, and then again by the same method the physical address can be calculated. Next is going to be stack segment register. Stack segment का वैसा ही है. Again, as far as stack segment register is concerned, again it is 16 bit. It is going to hold the 16 bit starting address. Okay, and as far as the logical address is concerned, it is going to be there in stack pointer. Stack pointer is another 16 bit register. Stack pointer is another 16-bit register. Push or pop instruction, मैं बाद में आपको बताऊंगा push or pop instruction क्या है. अभी you be assured कि आप push or pop के बारे में ज्यादा मत सोचिए अभी, because this is not right time to tell you what is push and pop. क्योंकि सब कुछ मैं अगर इस समय बताने लगूँ तो things will get more complex. So I'm trying my level best to make the things as simple as I can. Okay, तो यहाँ पर आप समझिए कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर 16 बीट का होता है. ये फिर से मैं स्टैक सेगमेंट बताता हूँ आपको. दिस इज स्टैक सेगमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. स्टैक सेगमेंट ये भी 16 बीट का होता है. इसका अगर 15 आपको फिजिकल एड्रेस निकालना है 20 बीट का, तो क्या होगा? स्टार्ट एड्रेस जो है वो रहेगा स्टैक सेगमेंट में. लॉजिकल एड्रेस और दिस इज लॉजिकल एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस, इट वुड बी देयर इन यहाँ पर स्टैक पॉइंटर में रहेगा. लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस कहाँ रहेगा? स्टैक पॉइंटर में रहेगा. कैलकुलेशन जो है वैसे ही रहेंगे. नाउ द लास्ट वन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट. एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर में क्या होगा? अगेन एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर इज अगेन 16 बिट रजिस्टर which is going to hold the starting address of the starting of the extra segment location, starting address of the extra segment location, and the DS data segment, sorry, the I mean the string instruction. I forget about string instruction now here. The DI is going to be
DI is going to be used to hold the logical address or offset address. Okay, DI is going to hold the logical or offset address, and this is how the 20-bit physical address can be calculated. So in summary, let me go back again. In summary, there are four 16-bit register: code segment, data segment, extra segment and stack segment. अभी क्या काम है इनका? इनका बेसिकली कोड सेगमेंट का रोल क्या है? It is going to hold the code instructions. Data segment and extra segment will be used to store the data, and stack segment will be used to store again data. But I'm going to tell you the role of stack memory and push and pop as well. But let me finish this first, and then I will tell you what is the stack memory is all about, right? So stack segment again 16-bit register, and how the physical address is being calculated. Let me tell you again. Physical address will be calculated as far as code segment is concerned. Physical address calculate करते समय code segment में 16-bit का जो starting address है वो code segment में रहेगा, and logical और offset address जो है वो रहेगा instruction pointer. डेटा सेगमेंट के समय क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो डीएस में रहेगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में, एंड उसका लॉजिकल एंड ऑफसेट एड्रेस जो है वो रहेगा आइदर डेस्टिनेशन इंडेक्स डीआई और एसआई में, राइट? एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या होगा? इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट में रहेगा, डेस्टिनेशन उसका जो लॉजिकल एड्रेस जो है वो रहेगा डीआई में, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर में. स्टैक सेगमेंट में क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा स्टैक पॉइंटर में, एंड उसका जो लॉजिकल एंड ऑफसेट एड्रेस जो है वो रहेगा स्टैक पॉइंटर में. So this is how the stack segment, all these 4 segment registers are, and this is how the calculation of the physical address can be. This is how, because I already told you how the 16-bit logical address can be converted into 20-bit physical address. So I'm sure, because only going through the first explanation, I'm sure you might be having many doubts. Okay, as I mentioned earlier, please start writing your questions, your queries in your notebook, and at the end of the session we'll be having interaction, and you can raise those questions so that it will be easier for you to understand. Okay, so after very soon this session is going to be terminated, and you have to again join by using the same link. Okay, उसी link से फिर से आपको quickly join करना है. Okay, now this is all about CS, DS, SS, ES. IP की बात कर रहा था मैं. IP is